Thank you very much, sir. So let me first start by thanking the Honorable Prime Minister, the Leader of the House, Shri Jagat Prakash Nadda, my party, and you, the Honorable Chairman, for giving me this opportunity to speak in the मोस्ट फेमस फाइनेंस मिनिस्टर अपने देश के करेंटली निर्मला सीतारमन, जो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में अपने टैक्स जो पॉलिसी से जो न्यू टैक्स उन्होंने स्लैब्स लाए उनके वजह से, और जिस तरह से उन्होंने टैक्स का मजाक बनाया और मीम कंटिन्यूसली अपने सोशल मीडिया पे चलते आ रहे उनके टैक्स की वजह से, जिस तरह से उन्होंने अभी कैरमल पॉपकॉर्न जैसे कुछ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था जिसमें उन्होंने टैक्स लगाया था, तो उनका जो हमारा स्पीच है पार्लियामेंट ग्लोरियस डे, जो ग्लोरियस जर्नी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, उसके ऊपर पार्लियामेंट में क्या स्पीच दिया था वो देखते हैं आज के इस एपिसोड में, आज के इस वीडियो लाइव के अंदर। This discussion marking the historic occasion of 75 years of our Constitution. I feel very honored and equally I feel humbled that this opportunity has been given to me. I thank the entire House and seek your indulgence if I come up with some thoughts which I'd like to share, which any member could have a difference of opinion. But I start again by paying homage to all the 389 members of the Constituent Assembly. In particular, the 15 women who, in less than 3 years together, took up the arduous challenge and prepared in a very challenging environment the Constitution for India, and which has stood the test of time. Until today, we are extremely proud of the way India's democracy is growing. As we mark the 75th year of our Constitution, sir, it is time, I would think, to reaffirm our commitment to build India, that is Bharat, that shall uphold the spirit enshrined in this sacred document. So with those words, I get into telling about the journey that these 75 years have seen of our Indian Constitution, and also to say why India's Constitution and India today stands out in a very separate league of its own. Sir, let me just remind, and I'm sure very many members of this House will know, that post-Second World War, nearly 50 countries, in fact over 50 countries, had become independent and they had their constitution written, but many have changed their constitutions, not just amended them, but literally changed the entire feature of their constitution. But our constitution has stood the test of time, of course yielded itself to very many amendments, and here therefore I would like to have a few words of what Constitution India expert Dr. Subhash Kashyap had to say. While many constitutions of nations framed after the Second World War have floundered and gone into oblivion, our Constitution successfully faced many crises and survived. This itself is evidence of its resilience, dynamism, and growth potential. Now, India's experience has shown that our Constitution remains robust, yielding to several amendments, as I said,
which were the need of the hour. And Dr. B.R. Ambedkar, the chairman of the drafting committee, had said, and I quote, "I feel, however, good a constitution may be, I feel, however good a constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it happen to be a bad lot. However bad a constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work it happen to be a good lot." Unquote. These are words of Dr. B.R. Ambedkar, sir. And in this background, therefore, with those words right afresh in our mind, I'd like to discuss about how in the last 7 decades, the living document that our Constitution is has faced very many amendments. And while looking at those amendments, I'd like to have a touchstone of 4 different elements. One, has the social intent behind any amendment been genuine? And therefore the outcome has been genuine? That's one test I would like to place any amendment on the testing board. Second, I'd like to see if the economic intent and the economic outcome of any constitutional amendment has actually been bona fide and has the outcome helped the society at large. Third, I'd like to test it on the ground of process adopted for it, for the amendment itself. And fourth, the constitutional spirit behind such an amendment. Now, if an amendment can go through these kind of tests, we'll be able to see why India's constitution, going by the words of Dr. Ambedkar, if you had good people who are called to work on it, give good outcomes. If you have, I'm using Ambedkar's words, bad people who are brought to work on it happen to give such outcomes which are discussed. So if I move to talking about those amendments which have gone through these 4 tests, we'll be able to see how the intent and the outcome are justifiable and people in the history books do write about them. Sequentially, because it is the first ever amendment, I'd like to take about the first Constitutional Amendment Act of 1951. So it's been said, and Honorable Prime Minister, while talking in the Lok Sabha, also referred to the fact that there was an interim government in place between 1947, August 15. The interim government was there before that as well. And it lasted till 17th April 1952, post which an elected government took over the charge. But during 1951, when the amendment for the first Constitutional Amendment Act was passed, it was an interim government and not elected government of India post 1947. Now, this was enacted, therefore, within a year of the commencement of the Constitution. It's worth remembering. In fact, on the issues related to the amendment, or which triggered the amendment itself, which is the freedom of speech and expression, the amendment added 3 more heads to Article 19(2), saying public order could be a cause to restrict freedom of speech, friendly relations with foreign states could be a cause to restrict freedom of speech, or incitement to an offense could also be a cause. These were the amendments brought in the first Constitutional Amendment. So the Supreme Court of India, even in 1950, 1 year before this amendment, had passed 2 landmark judgments that paved the way for freedom of press under Article 19(1)(a). The Supreme Court had ruled in favor of the communist magazine Crossroads, and the RSS's organizational magazine Organizer. The Supreme Court had ruled in favor of them in 1950. Many high courts also upheld the freedom of expression of our citizens and ruled in their favor. But in response,
the interim government thought that there was a need for a first constitutional amendment, and that was brought in by the INC, and it was essentially to curb the freedom. So India, a democratic country, which prides itself even today about freedom of expression, saw the first interim government coming up with a constitutional amendment which was to curb the freedom of speech of Indians. And that is within 1 year of adoption of the Constitution. So, let me say, sir, that is because the first Prime Minister of this country deplored press scrutiny of his government, even as he publicly praised freedom of the press. There was no doubt about it. And he had scrutinized the amending bill himself before approving its introduction in the Parliament. In the Parliament, sir, it didn't go through smoothly at all. The voices which spoke about it, and I will also refer some of the observations made by eminent members, vehemently who opposed it. Sri Shama Prasad Mukherjee said, you can pass a law, I'm quoting, sir, you can pass a law and say that the entire task of framing, interpreting, and working the Constitution will be left in the hands of Pandit Jawaharlal Nehru, assisted by such people whom he may desire to consult. I would think it was a snide remark, saying, oh, you do it all yourself with the people who you choose to have, and not with the approval of the Parliament. That was the extent to which Pandit Shama Prasad Mukherjee was upset about this amendment. Sir, he also said, you're treating this Constitution as a scrap of paper. You have declared preamble of your Constitution that you have done something unheard of in history, that within so short a period of attainment of freedom, you have trusted the people of this country to draft a Constitution. You have given a charter of rights to them. Now, Dr. Shama Prasad Mukherjee says, now you come forward and stab them in the back. You're not working for the benefit of the present generation, but for party ends. But for party ends, unquote. Sir Sri Kameshwar Singh, a member of the Constituent Assembly, also had a lot of comments to pass, and he said, I quote, this Parliament, again, is a provisional one, and it cannot be said to be reflecting the will of the people in the way the Constitution wants Parliament to reflect it. For a government or a Parliament of this kind, it is highly improper to make such fundamental changes in the Constitution without making any reference to public opinion, and that too at the fag end of the strenuous parliamentary session and almost on the eve of a general election, unquote. So scathing remarks were made, and despite these remarks, Prime Minister Nehru went ahead with the amendment. Kameshwar Singh again goes about to say, do they not show, I quote, do they not show utter disregard for the Constitution when they attempt to amend it simply because some of the laws have been criticized and found invalid by the judiciary? Today we hear comments from the Indian National Congress about how the current government is questioning the judiciary. This comment coming from a member of the Constituent Assembly itself says, prior to the First Amendment to the Constitution, which curtailed freedom of expression. The Prime Minister, he furthers, the Prime Minister, I'm constrained to say, that is Sri Kameshwar Singh, the Prime Minister, I'm constrained to say, is creating a bad precedent by sowing the seed of executive despotism, and playing with the supremacy of the Constitution for party advantages, unquote. So there was no doubt this amendment was more raised for the sake of the party or the Prime Minister and the government's image, rather than assuring what the Constituent Assembly had suggested as the Constitution which was going to be adopted.
an amendment bill was passed, the Press Objectionable Matter Act on 23rd October 1951. We know, therefore, the amendment, the intent, the four tests that I was talking about: social impact and intent, economic impact and intent, the constitutional spirit, and the process adopted for the amendment, all of which are questionable, but nevertheless, that amendment was undertaken, and we heard how that amendment till today affects the freedom of speech of this country. Now, it is not as if this 1951 amendment happened all in a sudden. Prior to the amendment and post the amendment, we've had recorded action taken by those government that day, that particular government, in curtailing the freedom of speech. So the act was just waiting to happen, because even before it they started it, and even after that they were continuing. What are the examples, sir? Majroor Sultanpuri and Balraj Sahani were both jailed in 1949 itself. For what mistakes, sir? During one of the meetings organized for the mill workers in 1949, Majroor Sultanpuri recited a poem that was written against Jawaharlal Nehru, and therefore he had to go to the jail. Sir, he refused to render an apology for the same and was jailed, therefore, in 1949, along with Balraj Sahni, eminent actor of those days. So that is the level of tolerance, and today we hold our constitution in our hand, go about it, and say freedom of speech. There is sense of fear in the country. Majroor Sultanpuri didn't feel it, Balraj Sahni didn't feel it, but the history repeats when it comes to the Congress party. Sir, Congress's record of curtailing freedom of speech didn't confine it with these two people. Nehru, a political biography which was written by Michael Edwards, in 1975 was banned. They banned also a film called Kissa Kursi Ka in 1975, which was directed by Amritlal Nahata, just because it questioned Prime Minister Indira Gandhi and her son, and also the Information Broadcasting Minister then. They banned also John Dalby's book, Himalayan Blunder, because it spoke about some huge crushing military disaster which happened in 1962, the China War. The details shouldn't come out, and therefore they banned that book as well. So this, and a bit later, 1988, Salman Rushdie's book, Satanic Verses, was also banned. So the spree of curtailing the freedom of expression, the spree of, containing freedom of press has happened before 49, and so during 49 and 50, 51, the act comes, and subsequently also it continues. So it's nothing new. So the amendment, again, a second issue that I'd like to draw your attention to. I said I'm putting it through 4 tests. A 9th schedule was brought into through the first Constitutional Amendment Act. The 9th schedule, sir, is an interesting innovation brought for bypassing judicial review. Why was it brought in? I'm questioning the intent, sir, the constitutional spirit which is not being respected, and the process which is adopted are part of the test I want every amendment to be put to, so that you know whether it is done with the national interest, or is it done with some economic public good, or if it is brought in because there's a social large good which is required to be obtained. No, the 9th schedule was brought in only because they wanted to bypass judicial scrutiny. Any act incorporated in the 9th schedule became fully protected against any challenge in any court of law under any fundamental right. So even the act declared invalid. Even worse, today about everything retrospective we talk, saying no, nothing can happen in retrospective, it has to be futuristic. So prospective is what? Whether it is taxation, whether it is benefits, whether it is any clarificatory note. But here we go, the act declared invalid by a court becomes valid retrospectively
after being incorporated into the 9th schedule. That's the extent to which they went so that they can bypass judicial scrutiny. And Congress speaks about protecting rights and also on judicial independence, sir. It is shocking. Yes, we'll come. I'll come. Please, sir. Jaramji, take your place. The third point, sir. Please. अच्छी डिबेट चल रही है, सुनिए, आपका जब समय आएगा बोलिएगा, प्लीज। SC, OBC, come on. People who sat over Kelkar. Sir, the next instance which I would like to put through is amendment being enacted to, again, the judiciary was held in contempt. They had to be committed judiciary or else they were not respected at all. Another example, sir. Constitutional amendment was brought in to nullify a judgment that arose in the case of Mrs. Indira Gandhi versus Raj Narayan, wherein the order of the Allahabad High Court setting aside the election of Indira Gandhi was challenged. So, during the pendency of this case in the Supreme Court, the Congress party enacted the 39th Constitutional Amendment Act in 1975. Again, earlier there is a Supreme Court and many other high courts have given clearance, but even then we'll curb freedom of speech, 1951, the First Amendment. Here, a case is pending. Mrs. Indira Gandhi's case is being heard in the court, Allahabad High Court. But no, we are in a hurry. What if the court comes against me? So I come up with a amendment, 39th Constitutional Amendment Act, 1975. Again, valid retrospectively, which added Article 392A to the Constitution. What did it say? It said elections to the President, Vice President, Prime Minister and Lok Sabha Speaker cannot be challenged in any court in the country, and it can be done only before a parliamentary committee. Imagine the extent to which for a person to save her chair, इसीलिए किस्सा पुर्सी का was banned. कुर्सी बचाने के लिए कोर्ट का वर्डिक्ट आने से पहले ही हम जाकर के अमेंडमेंट करेंगे पार्लियामेंट में. यही है इनके इतनी दूर तक जाने वाले विषय, कानून को दुरुपयोग करना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाना देश के हित में नहीं है, प्रोसेस सही नहीं होता, इससे आर्थिक सुधार कुछ होने वाले नहीं है या सामाजिक सुधार भी कुछ होने वाले नहीं है. व्यक्तिगत और परिवारवाद के लिए ही अमेंडमेंट हुआ है. सर, मैं दूसरी और एक उदाहरण देना चाहती हूँ. उदाहरण देना चाहती हूं जिससे सामाजिक सुधार के लिए अगर कोर्ट से एक ऑर्डर आता है उसको भी, क्योंकि हमारे राजनीति के लिए वो उचित नहीं है, इसीलिए सामाजिक न्याय दिलाने वाले कोर्ट के आदेश के खिलाफ आकर के अमेंडमेंट कानून को करते हो हाउस में. इससे बढ़िया उदाहरण नहीं मिलेगा सर शाहबानू बेगम केस में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उस महिला को न्याय दिलाने के लिए, एलिमनी देने के लिए, डाइवर्स के बाद जो पैसा मिलना चाहिए वो दिलाने के लिए कोर्ट से जो आदेश आए, द कांग्रेस पार्टी पास्ड द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवर्स एक्ट 1986 which denied, it's very important, it denied Muslim women their right to alimony. सामाजिक न्याय, महिला के लिए न्याय मिलना नहीं चाहिए, चाहे वो कोर्ट में से आता है या कुछ और जगह से आता है, हम कानून से उनको नकार देंगे. महिला सम्मान नारी शक्ति बंधन अधिनियम ले आने वाले हमारे पार्टी इधर है. इस सदन में पहला कानून जो पास हुआ वो रिजर्वेशन फॉर विमेन सर, whereas the small benefit a widowed woman would have, a divorced Muslim woman would have got, was also defeated by this act. The constitutional amendment which the Congress party brought in 1986. So my test again, sir,
neither samajik nyay, nor arthik nyay, nor the process, nor the constitutional spirit. Nothing of this was respected. And each time the Congress brazenly, only to help the family, the dynasty, kept amending the constitution, and this is how far they went, even if it affects any particular women who desperately needed the benefit. Sir, I'll come again to one more, the emergency, where that one important touchstone, the process, was completely violated. On 18th December 1976, the then president gave his assent to the Constitution 42nd Amendment Act. During the emergency, when the term of the Lok Sabha was extended without proper justification, they invoked the law to say Parliament has to be in session for 5 years, but we needed to have one extra year, so the act was extended. The Lok Sabha term was extended. And in that extended term, when the entire opposition was put to jail, there was nobody there, and entire opposition was in the jail. Then comes constitutional amendment, sir. The process, the touchstone that we need to have, is the process valid? That was a total invalidated process, and therefore I would think this is a blatant abuse which the country majorly agreed on. Sir, only 5 members opposed the bill in the Lok Sabha. There was none in the opposition in the Rajya Sabha to oppose it. Imagine, constitutional amendment being passed, entire opposition in the jail. In the Lok Sabha, only 5 people are there to oppose it, even some coming from their own party. And in the Rajya Sabha, no opposition. But constitutional amendment, changing the preamble itself happens. The alteration of the preamble to include socialist and secular highlights the disrespect and disregard the Congress has for constitutional processes, principles, and institutions. Sir, the amendments were not about strengthening democracy, sir, but protecting those in power. Again, the process is used for strengthening the family. Sir, Baba Saheb Ambedkar had argued, and I quote, talking about whether the word secularism, talking about whether the word socialism should be included in the constitution. Baba Saheb Ambedkar argued, I quote, I do not see therefore why the constitution should tie down the people to live in a particular form and not leave it to the people themselves to decide it for themselves, unquote. And therefore, in the original constitution, the word socialism was not as much as the word secularism. So 21 MPs, all opposition, belonging to all opposition parties, were held in jail. Manya Advani ji, Manya Atal ji were all in jail under Preventive Detention Law, Maintenance of Internal Security Act, 1971, the infamous MISA. And I know of political leaders who've chosen to have their children named after MISA to remember those black days. And now, they wouldn't even mind having alliance with them. Sir, all these together turned the Constitution into a qualitatively different text from what it was originally as adopted in November 26. So I'd just like to come here for one observation. Opposition member, respected Jairam Rameshji, refers to the work of Granville Austin with a left-handed compliment saying, we read it, but does anyone in the ruling party read it? Sir, and he says, masterly book, yes, masterly book. He tells the full story of the amendment carried out till 1980. So I'm starting from 51, and I'm also going on that journey.
talking about amendments, their purpose, their intent, their process. Now, since Jairam Ramesh has mentioned it, and there is some Granville Austin's line that I like to quote back to him. Sir, emergency, 42nd Amendment Act, the landmark Keshwananda Bharati case of 1973, the basic structure, doctrine, whole lot of things. In the words of that masterly Granville Austin, I quote, sir, the important constitutional development of the emergency, other than its very imposition, was the enactment of the 42nd Amendment. Austin says this. And he further says, coming in November 1976, the amendment demonstrates the progression of the Prime Minister, referring to Mrs. Indira Gandhi. I really quote again. Coming in November 76, the amendment demonstrates the progression of the Prime Minister and her government from having near absolute power without a coherent program, other than the protection of her prime ministry to power expressed through fundamental constitutional change. So, unquote. Exactly the point that I'm putting forth about emergency, the way in which 42nd Amendment passed through, how opposition leaders were all in the jail, not one person to oppose in the Rajya Sabha, in the Lok Sabha, just 5 of them speaking against it. When Granville Austin has said this, poor Jairam Ramesh did not mind quoting something else from Austin, but ignored this. Point proves. So the selective... प्लीज आप बैठ जाएं। माननीय शक्ति सिंह जी, आप जगह लें प्लीज। माननीय जयराम रमेश, I have Granville Austin in my hands right now, and the same Granville Austin writes that the 44th Amendment was passed by the Lok Sabha and the Rajya Sabha to override the 42nd Amendment, large parts of the 42nd Amendment. And who voted on the 7th of December 1978 to repeal parts of the 42nd Amendment? It was Indira Gandhi herself. So Indira Gandhi in 1978 voted to repeal the parts of the 42nd Amendment which she realized had resulted in her electoral loss. So it's not, don't read selectively. Thank you, Jairam Ramesh. Now, Honorable Minister. Thank you, sir. Please. Thank you, sir. You have responded. You have responded, please. 1978. Honorable Jairam Ramesh, please be brief. मैं आदरणीय रमेश जी का ज्ञानवर्धन करना चाहता हूं कि 1978 में मोरारजी देसाई was the प्राइम मिनिस्टर। जनता पार्टी की सरकार थी और जनता पार्टी की सरकार ने 42nd अमेंडमेंट को 44th अमेंडमेंट से हटाने का काम किया और आपको जनता ने हरा दिया था। श्रीमती इंदिरा गांधी was no more the prime minister, and when she was the prime minister, तब उन्होंने हर तरीके से प्रजातंत्र को रोकने का, गला घोटने का काम श्रीमती गांधी ने किया था। जयराम जी, प्लीज। मुझे सुना नहीं, मुझे ठीक तरीके से उन्होंने सुना नहीं। मैंने कहा था 44th अमेंडमेंट आया 1978 में, मोरारजी भाई प्रधानमंत्री थे और 6 दिसंबर 1978 में लोकसभा में इंदिरा गांधी जी ने वोट किया 44th अमेंडमेंट के लिए। यही तो मैंने कहा था। ऑनरेबल मिनिस्टर, प्लीज। माननीय मंत्री जी, सिर्फ माननीय मंत्री जी की बात रिकॉर्ड पे जाएगी, प्लीज। Thank you very much, sir, and I fully accept Jairam Ramesh's observation. Obviously,
Leader of the House was right in saying Morarji Desai was the Prime Minister, and during the voting, Srimati Indira Gandhi had said that, and she supported the changes in the changes to the 42nd Amendment. Very well. But the idea that I have right from the beginning said, yes, Der Aya Durustaya is what the Hindi language gives me, but the fact remains. And I'm glad that she changed her mind. It was such an improper thing to do during an extended tenure of the parliament. And an improper thing, even worse to do, putting the opposition and then seeking a constitutional amendment. So at least in 78, after a massive defeat, which of course later she overturned and won the election and came, that's a process, that's an electoral process. That is the electoral process. And electoral process does teach lessons. Does teach lessons, and Srimati Indira Gandhi learned that lesson. I want to say this to the Congress party today. Srimati Indira Gandhi learned the lesson, and I'm happy Jairam Ramesh says that she stood up to support the amendment Morarji Desai and his government was bringing. But today's Congress, sir, I'll come to that. Sir, today's Congress is the matter that we need to talk about. But before that, sir, the eminent person who became speaker later on, Shri Mavlankarji, also said some things. These are words which we need to have a recall, because it's important for all of us sitting in this august house to know what the opinions were, and then take the next 75, next 200, next 500 years forward of this constitution. Mavlankar says, sir, and I quote, "This particular bill brings an almost qualitative change in our constitution structure. The tragedy of the situation is that by this amendment bill, the citizens, the courts of law, the states, the president, and indeed even this House of Parliament are all sought to be denigrated, and only the union executive is sought to be made to thrive, grab, and aggrandize." Unquote. So if that one amendment has brought in such thinking individual to say such harsh words, it needs retrospection. We should never repeat such, great follies, in which we took the constitution for granted. People rejected such people, and lessons have to be learned. So, sir, I'd like to again say, when I soon would want to speak about what's the attitude of Congress today, I'd like to come to one line of an eminent person which was said during the 42nd Amendment debate. He was no less than later on chief minister, or prior to that also, and a minister. But as a Congress MP, Sri C.M. Steeple, an eminent congressman. Yes, it might be useful to remember that also. I'll read the quote. It might be useful further. Sir C.M. Steeple, as a Congress MP at that time, says, during the debate of 42nd Amendment, which had so many implications. So it brings me the shivers to read this line, but I'm reading it because we should know how we speak. Quote, sir, I quote, "Now, the power of this parliament, through the 42nd Amendment that is declared to be out of bounds for any court." He says this, now the power of this parliament is declared to be out of bounds for any court. It is left to the courts whether they should defy it. He continues, "I do not know whether they will have the temerity to do that. But if they do, that will be a bad day for the judiciary. The committee of the House is sitting with regard to the inquiry into the conduct of judges. We have got our methods, our machinery." Unquote. Sir, imagine if today one of our MPs would say, anywhere, would say this and say,
the temerity of the judges, the courts. But no, what we hear from Congress today, oh, you are undermining institutions, you have no respect to the Constitution, you that, you this. Look at this one statement, sir. And during emergency, passing the 42nd Amendment, the attitude of Gamand, the Gamandiya Gadbadhan, even today, but then they spoke that, passing the 42nd Amendment. The people of India didn't forgive this, and that's why they lost miserably. When she conceded to change the amendment, no? So, all right, don't beg for concessions like that. All right. Sir, what is today's INC, sir? In the budget session 2022, मैं ये गमंड बदला नहीं है, कम नहीं हुआ, उसको साबित करना चाहती हूँ. Budget session 2022, sir. I'm not taking the name of the Congress leader who's not in this house, but I'm sure this statement will obviously ring a bell to everybody. The judiciary, I quote, the judiciary, the election commission, Pegasus, these are all instruments of destroying the voice of the Union of States, unquote. You heard CM Stephen then, and you just see the statements which are coming. Committed judiciary is what they wanted. The contempt for the judiciary and the constitutional bodies is not new now. And that term was used by one eminent congressman. And that eminent congressman, I'll take his name, sir, because I have to quote him, Shri Mohan Kumar Mangla. He had said that the government will appoint chief justices based on the government's assessment of their philosophy and outlook, telling the parliament in 1973, I quote, certainly, we as a government have a duty to take into consideration, I'm putting it in brackets. Certainly, we as a government have a duty to take the philosophy, the outlook of the judge in coming to the conclusion whether he should or should not lead the Supreme Court at this time. I repeat this quote, sir. Certainly, we as a government have a duty to take the philosophy and the outlook of the judge in coming to the conclusion whether he should or should not lead the Supreme Court at this time, unquote. After the judgment on Keshwanand Bharati case, sir, you're an eminent senior who became a senior advocate at a very young age, and I stand before you talking small things about judiciary. Pardon me if I have any, oversight which has not worked well. A day after the historic judgment in April 25, 1973, in the Keshwanand Bharati case, in which the majority declared that the parliament cannot alter or abridge the basic structure of the constitution, Srimati Indira Gandhi was furious with the judgment because it constricted the party's plan to bring in major amendments. So the three judges, this is what I want to highlight, committed judiciary. If they are not there, we'll do what we want. So the three judges were accorded swift punishment via suppression on April 26, and Justice A.N. Ray, who did not subscribe to the majority decision, was elevated. After Ray retired in 77, again, Srimati Indira Gandhi government gave supersession, superseded the senior most candidate, Justice Hansraj Khanna, to appoint Justice Mirza Hamidullah Beg as the Chief Justice. So it is really sad that the test that I'm putting each one of these amendments, whether they was in line with the constitutional spirit, whether the process was followed, whether the large economic good was considered or social good was considered as an objective, none of them meet that. The OBC Commission is something which I want to in contrast mention. How our intent, Prime Minister Modi was clear. The OBC Commission will have to be set up and constitutional amendments have to empower communities
and not put them at a disadvantage. But therefore, the 102nd Constitutional Amendment Act was brought in 2018 and inserted Article 338B. But what's the contrast, sir, with the Congress? In 1950, Kaka Kalekar Commission was formed, but Congress prevented its report from being published. Dr. Ambedkar was of the view that Pandit Nehru was not concerned about the welfare, was not concerned enough about the welfare of the SCs. I quote Baba Saheb Ambedkar. From the very first election, we have been fighting against the Congress because it is unnecessarily interfering with our rights. Just see the leader of the Congress party, Pandit Nehru. He has delivered 2,000 speeches during the last 20 years, but he has never spoken about the welfare of scheduled castes even once. This is Baba Saheb Ambedkar's words. So, from this, he further says, from this you can judge what sympathy the Congress party can have for our people when its leader is so much adamant. Unquote. Sir, this is said several times, but it's worth saying now. Congress did not even allow Baba Saheb's photo to be installed in the central hall of the old Parliament House for decades. He was, of course, denied Bharat Ratna. Similarly, the Mandal Commission was created to provide reservation for backward classes. But Mrs. Indira Gandhi or even Sri Rajiv Gandhi opposed it, delaying 27% reservation for the OBCs in central institutions. So we are the ones who brought it in, not the Congress. One more interest. One more instance of how the GST, which was again a constitutional amendment which has to be brought in. Sir, GST related constitutional provisions has never been encouraged prior to its bringing by Prime Minister Modi in 2017. Sir, this started very quickly to trace the timeline, sir. Shri Atal Bihari Vajpayee was the first to suggest during the NDA rule in 2000 to get going with the GST. However, the sincere efforts that he made could not realize or could not see the light of the day. And the 10 years after his tenure, led by the UPA, did not much do to get it on board. Sir, within 2 years after the introduction in the Parliament of the GST related 101st Constitutional Amendment Act was passed and ratified by more than 50 states with effect from 8th September 2016. Just the data will tell you, sir, where the Congress party was. Despite being a coalition comprising of 26 parties, the UPA could not manage to get this GST. Even Congress-ruled states were opposed for the GST to be brought in. 2012. I'll say that as well. That will also be said. 3 BJP-ruled states also opposed. I don't hide facts. 3 BJP-ruled states also opposed, including Gujarat. I'm saying that. Sir, I'm saying it, sir. I'm saying it myself that Gujarat opposed it. I'm saying it myself. अरे नंबूत्री बात गवर्नमेंट को सेव नहीं कर पाया कांग्रेस से, आप क्या खड़े हो रहे हो? कम्युनिस्ट है, बैठ जाओ. Sir, 3 non-BJP ruled states, sir. So I don't know. 3 non-BJP ruled states. I said about Gujarat, now I'm saying non-BJP ruled states, including
Congress ruled Maharashtra opposed provisions of the UPA's GST. So if they want to first shout about Gujarat, I'm saying it myself. But please do shout about Maharashtra as well. No, they want to pretend they were all ready. They were not ready. Sir, Congress-led ruling UDF government, all right, in Kerala voiced severe concerns. Okay, sir, left front opposes, UDF opposes, Congress is part of the UDF, but no, they will never say that. One Gujarat is what they want to say. And I'll tell you why Gujarat had to oppose also. So, they could not bring the GST amendment. When we bring it, this is how they would like to shout about it. But I'm sorry. I'm not lying, sir. I'm sorry. I will have to demand a written apology from Shri Jairam Ramesh for accusing me of lying, which I never do. And whether it is parliamentary or unparliamentary, first of all, sir, the chair, I trust you will take care of that. But accusing me of lying is now very clear, runs in the Congress blood. Somebody had to go to the court to say sorry. When I was the defense minister, not only did they call Prime Minister Modi as a chore, but they kept calling me that I'm lying. And who had to go and apologize in the court? And now I wouldn't mind seeing another member going and apologizing in the court, although the word said in the parliament is never taken to the court. Sir, all MPs in the House, when the GST was brought in, and this is also something which the Congress will have to gulp if they can. All MPs present in the House, including those of the Congress, had voted for the GST constitutional amendment, which was brought in by Prime Minister Modi. In fact, I wouldn't mind if Jairam Ramesh once again calls me that I'm lying, but records of the parliament will say it. Jairam Ramesh wanted to move some amendments, but Dr. Manmohan Singh personally asked him not to do so because of the fine consensus that has been arrived in the GST Council. Yes. Sir, I don't lie, records don't lie. Don't jump in a hurry to accuse me that I'm lying. Sir? I will authenticate it. Honorable Minister, I'm lying, please. Honorable Minister. Honorable Minister, it's a fair comment by Jairam Ramesh. You need to authenticate it. Yes, yes. And during the course of the day, when I watched the Lok Sabha debates, I frequently came across, please authenticate. It started in this house. Honorable Minister. Thank you, sir. I will authenticate. And despite the support given by the Congress in passing the amendment, GST constitutional amendment, you have the Congress leader, again not taking name, goes about calling the GST Gabbar Singh tax. Sir, and therefore, about amendments, I have said some words. Now I just want to highlight... Minister, but if some Gabbar Singh comes and files a suit then? Sir? If some Gabbar Singh in the country comes forward, oh yes, then I have been defamed there. That's right, sir. And the problem, sir, when GST matters come, I will sometime again speak as much as I've done it earlier. Congress ministers are sitting and arguing about rates, sir, that they will not know. The GST Council, Congress finance ministers are also sitting and talking about it. So we are marking the Constitution 75th year. I want to just remind again something very, very quickly, sir. When 75 years of Indian independence was marked in 2022, Prime Minister Modi had celebrated it in the name of Azadi Ka Amrit Mahotsav. Throughout the country, every state government participated. Every state government also picked up all the freedom fighters, known, unknown, all of them were celebrated, and there was a lot of discussion all over the country. And recently, sir, Prime Minister also spoke about the 11 oaths that we need to take in the Lok Sabha when he spoke. And in 2022, from the Red Fort, he had announced how Panch Pran,
Meaning, we need to get out of that gulami mansikta. We have to get over that and look forward to building this country and taking it forward and so on. But 75 years of Indian independence, Azadi Ka Amrit Mahotsav, 75 years of the Constitution, we are having these wonderful debates in the two houses. Every 25 or 50 years are celebrated, sir. I'd like to remind as to what was the celebration when in 25 years of Indian independence, what did we do? So I'm contrasting this. When the completion of the 25 years happened in 1973, sir, when in 1973, how was it celebrated, sir, 25 years of independence? There was a time capsule. A time capsule was interned, a Kal Patra was interned in the Red Fort. And at that time, the people were told, this time capsule will be seen only after 5,000 years. And in that time capsule, the journey of India, free India, was all being written, and actually, it was kept as a top secret. Nobody knew anything as to what was inside the time capsule. A professor of history was employed to write this India since 1947, marking the 25th anniversary. But it was kept a secret. Sir, questions were asked in the parliament. What exactly is in the time capsule marking 25 years of India's independence? What actually went into that intern? It was a steel and copper made vacuum-filled case into which the document was interned, and then it was put into the Red Fort. That one, sir, was kept a secret. When asked in the parliament, the then education minister apparently said, and I'm reading from the book published by an eminent parliamentarian, Ira Sejian. He puts in his book as to what was the reply given by the education minister then. And I quote, before that, the education minister expressed his inability to disclose the said document. What's the document which is in it? No, I can't disclose. And what did he say? I quote, within the limitations of its compass, it was designed to preserve an authentic record of our time for posterity. Having regard to this concept, the question of contemporaneous publications or laying the text of the document on the table of the House does not arise, unquote. The education minister, while he put the time capsule to be preserved for 5,000 years, does not allow the parliament to know what was inside it. That is 1973, 2 years before the emergency was brought. This kind of an operation in stealth happened, marking 25 years of India's independence, and the parliament should not be informed. That was the line the education minister gives. Even worse, sir, I just want to highlight what was said about Sri Atal Bihari Vajpayee in that capsule content. I'd like to say, and I quote from the books, the BJP of Atal Bihari Vajpayee is described as, says the author, and I quote, Jan Sangh People's Party is a militant orthodox Hindu party opposing the concept of secular state, unquote. This is what is being said about Atal Bihari Vajpayee in the capsule, about which they don't say in the House. They didn't say it in the House. Even worse, sir, if that is the record for first 25 years of independent India, which has to be preserved for 5,000 years, look at what has been said. C. Rajagopal Achari, there was no reference
There was no reference to C. Rajagopalachari, the first Governor General of this country. To the President of India, Dr. Rajendra Prasad had no mention in that content. Dr. Radhakrishnan, Zakir Hussain, and to the Prime Minister Lal Bahadur Shastri, who though short in physical stature, was tall in political stature, who went all the way to Tashkent as a pilgrim of peace to establish harmony in this part of the world. Don't you think this author, who's a parliamentarian, asks, don't you think that such names deserve to be inscribed in the historical document of our country during the period of the first quarter century of Indian independence, unquote. So that's the level of secrecy about even members of parliament, about eminent leaders of different political parties, and sly comments were all packed up in that. Later, it was all removed. So that is the nature of Congress party, sir. I want to highlight that fact. Sir, the names missed out is something which shocks the country, but that was the level to which the party went in the arrogance with which they were trying to rule. So the constitution and the misuse is what I'm talking about here. Sir, one more thing, again, on the economic impact of such amendments which they bring in. It's a test for every one of us, whether it is one amendment today or another amendment tomorrow. Does it have an economic intent for the larger economic good, social intent, process, constitutional spirit? Let's see, let's test each one of our acts, the amendments that we bring in, and then decide whether what we are doing is right. Sir, the Soviet model, which the Congress party copied under Prime Minister Nehru, continued with Indira Gandhi, was a model which did not do any good to this country, sir. C. Rajagopalachari, the socialism, that socialism was refashioned as Mahal Nobis model, the central command and control structure, the license quota Raj were all part of this. And in that, C. Rajagopalachari writes, sir, to the Prime Minister. He says, in an open letter, he says, Nehru came to Madras on Tuesday with all the paraphernalia of Prime Minister of India and attempted to, in a speech, talk about Rajagopalachari and his principles. But here, in Swarajya magazine, he publishes it in 1962, February 17, and I quote from that article. I want an India clear of the atmosphere of fear in which it is now enveloped, 62, where honest men engaged in difficult tasks of production or trade can carry on their occupation without fear of ruin at the hands of officials, ministers, and party bosses. He says that, I want an India where talent and energy can find scope for play without having to cringe and obtain special individual permission from officials and ministers, and where their efforts will be judged by the open market of India. And so on. He goes on, sir. I want the corruption of this permit license Raj to go. He says that. So a member who was part of the Congress party himself writes to Pandit Nehru saying this cannot go on. Your socialism is ruining this country. The license permit Raj could not continue because you are leading to corruption. Sir, periodically, Congress questions, hey, BJP, RSS, Jensen, what was your role during the freedom movement? We all know it and we've said it, but I want to ask the Congress, what is your role in the Arctic, India's economic freedom? What is India's economic growth? What is your effort in building economic strength of India? No wonder when we in 21 in our budget, if that is not true, sir, why in 1980 onwards the Congress party itself wants to dump license quota Raj, 91 they want to reform, and then take the claim for it saying we are the ones we reformed. You didn't have to reform if it was so good.
It was damaging the Indian economy, and socialism was therefore brought in into the Constitution's preamble through the 42nd Act, Amendment Act, only to prove that they are doing right thing. Although that was not needed at all, because the directive principle of state policy has enough and more. And that is where I want to bring this one particular important observation, sir. The Nehru Development Model, written by Arvind Panagaria. Latest book. This will tell you, sir, from an academic perspective also, how the socialism, the controlled Raj, the licensed quota Raj of the Congress's 50 years of rule ruined our economy. Though the country did come to terms with its mistake and changed course in 1991, by then it had lost 4 precious decades. Moreover, the history built over these decades continued to haunt its development efforts even after the change of course. For one thing, the base income remained low. Given that the opportunity to grow rapidly had been missed in early decades. Therefore, even an acceleration in growth to 7 to 8% range on a sustained basis could not deliver genuine prosperity for another few decades. Moreover, 4 decades of patronage of socialist ideas and policies came to hardwire Indian politicians, bureaucrats, intellectuals, and even business people in ways that made a swift march to a market economy politically challenging. That's the reality of the policy of the Congress party, which they themselves came. We've reformed the country. They baggaged the country in 50 years, and later they wanted to claim that they are reforming and bringing prosperity to this country, which is not true. So therefore, sir, when Prime Minister Modi gives a call that first of all, sir, with all this socialism, 42nd Amendment to changing the preamble, the much promised Garibi Hatao has not delivered by them. If it's not been delivered by them, what did that socialism do to us? So when Prime Minister Modi says Vikasit Bharat 2047, we all should have to work together to make sure that that is done with all of our responsibilities intact and such changes to the constitution which they brought, which has only brought decay for the Indian economy. I will not get into the details. Another paper from 2009, sir. Cato Institute Center for Global Liberty and Prosperity. Yeah, we're discussing the constitution and the mistakes done by the Congress party, as a result of which the Indian economy is suffering. Socialism kills. The human cost of delayed economic reform in India, sir. I authenticate this and give it to you to show how Congress parties attempts have only weakened the Indian economy. Sir, we changed that by clearly saying that the budget will now very clearly focus on the Indian economy, and as a result of which we will see a lot of economic growth. I'm not getting into the detail of the budget speech 2021, sir, paragraph 86. Those interested can see the thing. Sir, I'll come to this point about the Constituent Assembly, financial inclusion, economic justice. That is why I argued first, saying this declaration in the preamble, bringing socialism, was not warranted at all. There's enough and more said in the directive principle of states policy. Directive principle of state policy is adequate for us to do all the social, economic, justice related activity. But no, the Congress party was doing it for their political agenda rather than for the larger good. Sir, I like to say, sir, Ambedkar, sir, Dr. Ambedkar says on 19th November 1948, our objective in framing the Constitution is really twofold. Ambedkar says, sir, to lay down the form of political democracy, to lay down that our ideal is economic democracy, and also to prescribe that every government
whatever is in power, shall strive to bring about economic democracy. And a very clear, the directive principle, Dr. Ambedkar says this, the directive principles have a great value, for they lay down that our ideal is economic democracy, unquote. And this is exactly what Prime Minister Modi is doing. 54 crore citizens who once had no means are now being given extraordinary connection to banking. The Jan Dhan Yojana, principles guiding our democracy, equity, justice and opportunity. 50 crore mudra loans. 50 crore mudra loan accounts have created the pathway for micro entrepreneurs, street vendors, पूरे एक and घंटे so के on. स्पीच में इन्होंने प्रेजेंट में क्या चल रहा है Article अपने देश के 38 अंदर, of the directive अपना principle says एजुकेशन की हालत क्या the है, state shall बेरोजगारी, strive to महंगाई, promote the welfare of किसी the के people ऊपर भी by बात ना करते securing हुए and protecting बस पास्ट social में क्या order, हुआ by है संविधान ensuring के साथ, socio-economic संविधान political के साथ justice, कैसे and छेड़छाड़ by किया minimizing कांग्रेस ने, inequalities ये सब चीजों पे ही income बातें हो रही status, है। facilities बट and करंट में opportunities. देश की हालत क्या है Article उसका 39 कोई also बात ही नहीं says कर रहा है। very similar about adequate means of livelihood and ownership control. Article 46 about scheduled caste and scheduled tribes. So I just want to highlight how, because of the specific actions taken by our government, you find 1969, I go back, sir, for a minute. Mrs. Indira Gandhi on the bank nationalization said, the political situation in our country demands, quote, that banking facilities should be extended in an increasing measure to backward areas, to agriculture, to small-scale industry, and so on. And perhaps banking operations should be informed by a larger social purpose, unquote. But in spite of introducing socialism into the preamble, they did not achieve any of what Mrs. Indira Gandhi justified for bringing nationalization of the banks. They paid only lip service, sir. By 2011, census data reveals that less than 60% of Indian households had access to banking service. Bank accounts, sir, zero balance accounts were only 10.3 crores. By contrast, sir, 54 crore Jan Dhan accounts have been opened since 2014. 56% of the accounts belong to women. Similarly, pensions, insurance, and so on, sir. PM Mudra, 50 crore sanctioned accounts, 68% are women. Stand Up India, 1 crore SC/ST women borrowers, 30,000 crore has been distributed, 2.5 lakh people, of whom 76% of women are benefiting. PM Swanidhi, sir, 50,000 rupees loan is given to 67 lakh street vendors, of whom 45% are women, 42% are OBCs, and so on. Sir, we repeatedly in Lok Sabha and here spoke about how former Prime Minister said, if I send 1 rupee down, only 15 paisa reaches. By bringing in technology and using DBT, Prime Minister Modi made sure that accounts will receive, the beneficiaries will receive their money directly into their account. 1 rupee means 1 rupee will reach them, and this has helped save 3.48 lakh crores of taxpayers' money. ये सब These are इंटरनेट की very वजह से हुआ है मैडम जी। important to say that directive पहले principle के of state जमाने में policy, इंटरनेट इतना which नहीं था has अपने देश even के more अंदर। things for all of us to do, can bring in poverty alleviation, but not the Nara Garibi Hatao, which delivered nothing on poverty. So lastly, I pay my respects to the women who were part of the constitution makers. As I said, 15 out of 385 members were women. I would think you will indulge me when I read the names of these 50 women. Ammu Swaminathan, Annie Mascarenes, Dakshayani Velayudan, Begum Aizaz Razul, Durgabai Deshmukh, Hansa Jivraj Mehta, Kamla Chaudhary, Leela Roy, Malti Chaudhary, Purnima Banerjee, Rajkumari Amrit Kaur, Renuka Ray, Sarojini Naidu, Sucheta Kriplani, and Vijayalakshmi Pandit were the prominent women who were part of the Constituent Assembly, sir.
The contribution of these women in the constitution making is immense. I know after that, Pandit Vijayalakshmi Pandit scaled heights in diplomacy. Rajkumari Amit Kaur became the first woman to be a union cabinet minister. Durgabai Deshmukh was the founding member of the Planning Commission. Annie Maskarnas and Renuka Ray served as ministers in their respective state governments. Sarojini Naidu and Sucheta Kriplani went on to become first female governor and chief minister respectively. So I also appreciate the immense role played by the All India Women's Congress, who have done extremely good work, Women's Conference, All India Women's Conference. And these women were all celebrated during Azadi Ka Amrit Mahotsav, which we celebrated from 2022. The last observation I'd like to make, sir, it is very interesting that in this House, the first act that we passed is the reservation for women, which was the new act passed in the new parliament. I'd like to reiterate that Bharatiya Janata Party, my party, has always been committed for women and women's participation in politics. Even as early as 1994 in Vadodara National Convention, the BJP very clearly passed that seats must be reserved for women in both parliament and state assemblies. In 1994, sir. Then in 1998, BJP reiterated its commitment for women reservation by introducing it in the Lok Sabha. July 2003, BJP in its national executive in Raipur also passed a resolution to give reservation. 2007, BJP national executive approved 33% reservation for women. 2008 again, BJP amended its constitution so that its own office bearers will have 33% reservation for women, and I'm glad to say that I'm one of the beneficiaries of that reservation. And BJP has consistently supported women's reservation. In Rajya Sabha 2010, sir, I remember late Shri Arun Jaitley supported passionately to pass that, and in Rajya Sabha it was passed. But curiously, why that didn't go to the Lok Sabha, no one knows. And in the Lok Sabha, I think it was for reasons better known, but what was said in the public was some of the alliance partners were not favoring, and therefore the Indian National Congress did not have the courage to take it into the Lok Sabha at that time. BJP's Sankalp Patra of 2014 supported women's reservation. And again, Sankalp Patra before the 2019 election also very clearly supported. But I want to highlight the fact, sir, that in 84-89, Shri Rajiv Gandhi had 426 members in the Lok Sabha and 159 members in the Rajya Sabha. They did not have the conviction to pass the women's reservation bill at that time. Very clearly, they have been anti-women always. Shah Banu case is a very clear example. Sir, I would highlight the fact that although the credit is being taken for the Panchayat Reservation Act by Shri Rahul Gandhi and the dynasty, it was not him. It was P.V. Narasimha Rao who brought it and passed it on. But even then, it was only a lip service because no financial powers were given. Now, Honorable H.D. Deve Gowda ji, former Prime Minister, is not here. But in 1996, there was during his time, the reservation bill was brought in. Nothing was supported by Congress at that time. Atal Bihari Vajpayee ji in 98, in 99, in 2002, 2003 brought it. No, the Congress wouldn't support. But the Congress's memory is very weak that they didn't support any of the bill all the time, whether it was Deve Gowda ji or whether it was Atal Bihari Vajpayee ji. And then in 2008, even Dr. Manmohan Singh faltered. They managed to pass it in Rajya Sabha, which I said a minute ago, but did not go to the Lok Sabha for fear of their alliance partners threatening to walk out of the alliance, and they didn't want to lose power, but they wanted to save their kursi only, and therefore did not do justice to the women. Whereas Prime Minister Modi and BJP, from the beginning, stood by women, made the first change in the party, and brought the reservation bill here. And therefore, if anybody is committed to the constitution, it is BJP, Prime Minister Modi, and this government. And therefore, people who are walking with a book in their hand, constitution, sometimes not knowing that inside there are Kora Kagas, nothing printed. They're not even opening it to see whether it is there. But they're walking around with this book.
should know that they are the ones who repeatedly have failed the cause of the Constitution of India. Thank you very much. Honorable member. माना कि जो स्पीच है 75वीं एनिवर्सरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके ऊपर दे रहे हो, बट जो संविधान में बदलाव हुए हैं कांग्रेस के हाथ से, आपके हाथ से, बस आप उसके ऊपर बात कर रहे हो, लेकिन जो हमारा अपने देश के अंदर जो प्रेजेंट सिचुएशन है, किस चीज़ की ज़रूरत है हमें, जैसे वुमेन सिक्योरिटी की, आप वुमेन्स रिजर्वेशन की आपने बात की है, लेकिन वुमेन सिक्योरिटी की बात नहीं की। आज वुमेन की क्या हालत हो चुकी है अपने देश के अंदर। अभी रिसेंटली जो कोलकाता का जो केस हुआ था, तो वुमेन रिजर्वेशन तो लाए, लेकिन वुमेन्स के लिए जो स्ट्रिक्ट हमारे देश के अंदर लॉ होने चाहिए, वो अपने देश का अभी तक ना कांग्रेस ने लाया ना बीजेपी ने लाया। और पूरे सेशन में जो हमारा विंटर सेशन हो पार्लियामेंट का, उसके अंदर कुछ कुछ ही दिन हमारा सेशन हो, बाकी तो बस प्रोटेस्ट ही होते रहे और पूरे अपने सेशन को बर्खास्त करके रख दिए थे। और देश के जो बड़े से बड़े जो मुद्दे थे, वो एक भी मुद्दे उठा ना पाए, क्योंकि यहाँ पे बस पिछले पास्ट में क्या हुआ है और एक दूसरे को बस टिप्पणी करते हुए अपने लीडर्स चल रहे हैं, कोई देश के जो मुद्दे हैं उठाने को नहीं देख रहे हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा हो चुका है अपने देश का, बट वो पूरे पार्लियामेंट के इस बार विंटर सेशन में किसी के मुंह से सुनने भी नहीं मिला है। बीजेपी के जो लीडर्स थे उन्होंने बस कांग्रेस के पास के बारे में बात किया, और कांग्रेस के लीडर्स बस अडानी का टॉपिक लेके बैठे थे। बट जो यूथ है हमारा, जो बेरोजगारी से जूझ रहा है, उसके ऊपर कोई बात करना ही नहीं चाह रहा है, उसके ऊपर कोई बात किया भी नहीं। पार्लियामेंट सेशन तो आधा से आधा बंद करके रख दिए इस बार का। इस पार्लियामेंट में इतना सारा पैसा खर्च होता है। 2019-2020 की जो न्यूज़ है जिसमें बताया जा रहा था कि 2.5 लाख रुपए पर मिनट पार्लियामेंट के ऊपर खर्च किया जाता है, वो बस ऐसे टाइम वेस्ट करने के लिए, पास की बातें बस निकालने के लिए, उनको याद दिलाने के लिए कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, और जो भी चीज़ें हैं। बट प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं लोग, प्रेजेंट का कुछ बता ही नहीं रहे। प्रेजेंट में अपने देश की जो हालत हो चुकी है, अपने डॉलर कहाँ जा चुका है, और हमारे मैडम जी निर्मला सीतारमन जी, वो अपना टैक्स के अलग अलग हमें स्लैब्स ला के दिखा रहे, कैरामल पॉपकॉर्न अलग ही चीज़ें वो उसको इंट्रोड्यूस कर दिए। ऐसे अलग अलग चीज़ें अपने देश के अंदर हो रही है, गरीबों से पैसा लुटाया जा रहा है। जो अभी रिसेंटली जो रीसेल अपने जो कार है उसका रीसेल का जो अभी इन्होंने लाए, मुझे बताओ, जो हम पहले कार ले चुके हैं उसको हम कुछ पैसे पहले लॉस में बेच रहे हैं, उसके अंदर जो डिफरेंस है उसके ऊपर हम टैक्स देना, ये कौन सी बात हुई, कुछ समझा ही नहीं मैडम जी का। मतलब खुद की चीज है, उसको हम बेच रहे हैं खुद के बेनिफिट के लिए या कुछ कोई दूसरी कार लेने के लिए, तो मैडम जी वो जो डिफरेंस है उसमें से भी पैसा हमसे लेना चाहती है। मतलब गरीब खाए तो खाए क्या, और कमाए तो कमाए क्या, ऐसी चीज हो चुकी है। और वो तो बात अलग ही है, हम सैलरी में से भी टैक्स देना पड़ता है, और मार्केट से कुछ पैसा जाके मार्केट से कुछ लेने जाए तो हर चीज़ पे भी टैक्स देना पड़ता है। आज अभी हर अपने देश के अंदर हर एक चीज़ पे हम टैक्स 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 चल रहा है, और इतना सारा टैक्स तो दे रहे हैं वैसे भी अपन, क्योंकि हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि सभी हमारे अकाउंट से उनको पैन कार्ड से सभी डिटेल्स तो पता चली जाती है कि पर्टिकुलर जो इंसान है वो कितना टैक्स मतलब कमा रहा है, उसके ऊपर कितना टैक्स आता है। तो बट इसके बेनिफिट्स में अपने को क्या मिल रहा है, फैसिलिटीज क्या मिल रही है एज ए इंडियन, एज जो हम इतना टैक्स भरते हैं, तो हमें इसके बेनिफिट्स में क्या मिल रहा है। ढंग से एजुकेशन की क्वालिटी नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट स्कूल की हालत तो पूरी ख़राब हो चुकी है, गवर्नमेंट स्कूल तो बंद होने के कगार पे आ चुके हैं। और हॉस्पिटल, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हम देखें तो कोई जाने की इच्छा तक ना करे वहाँ पे, इतनी तो सेंट आती रहती है वहाँ पे, बहुत अच्छी खुशबू आती ही रहती है वहाँ पे अगर हम गए तो। पेशेंट की हालत तो ख़राब हो चुकी है अभी। उसके साथ साथ देश में अभी जो रिलीजियस वॉर हो रहे हैं वो तो अलग ही लेवल पे चल रहे हैं। अभी पता नहीं कौन से हर दिन कौन से कहाँ से न्यूज आएगी, कौन सा धर्म किसके साथ लड़ रहा है पता ही नहीं चल रहा है। शायद अभी क्रिसमस को भी नहीं छोड़े, क्रिसमस के दिन भी जाके कुछ ना कुछ कर दिए। तो देश में जो हालत चल रही है उस हालत के ऊपर कोई पार्लियामेंट में बात नहीं कर रहा है, बस पास की बातें खुदाल रही है कि आपने ये किए थे, आपने वो किए थे। और पास में क्या कांग्रेस ने किया है ऑलमोस्ट सभी को पता है, जिन्होंने
इतना नॉलेज रखा है पॉलिटिक्स के बारे में, देश दुनिया में सबको पता है कि कांग्रेस ने कैसे इमरजेंसी में चीज़ें की थी, और दलितों के साथ मतलब उनका क्या ओपिनियन था दलितों के ऊपर, मैक्सिमम लोगों को पता ही है। फिर भी अपने देश के आज जो लीडर्स है वही चीज़ें फिर से खुदार के कांग्रेस को बताए जा रहे हैं, और जो हमारे देश की जो करंट सिचुएशन है उसके ऊपर कोई बात करना ही नहीं चाह रहे। आज अपने देश का सबसे ज़्यादा यूथ अपने देश में पड़ा है, सबसे ज़्यादा यूथ अपने देश में है आज, और वो देश बेरोजगारी से जूझ रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हमारी गवर्नमेंट एग्जाम होती है उसके चक्कर में अपने जो यूथ है उनको बिजी करवा के रख दिया। वो है बिजी, 1 साल 2 साल पढ़ाई कर रहा है, यूपीएससी एमपीएससी बीपीएससी, अलग अलग स्टेट के अलग अलग एग्जाम्स, रेलवे के एग्जाम, सबके इसमें अपने यूथ बिजी है। और उसके साथ साथ कोई और जो हमारा यूथ है जो पढ़ाई को छोड़ के जो बिजी है वो झगड़े करने में, अलग अलग कास्ट के साथ, अलग अलग धर्मों के साथ झगड़े करने में बिजी है। मतलब लोगों को बस कुछ ना कुछ इसमें बिजी करवा के रखा है, क्योंकि वो क्वेश्चन ना करे गवर्नमेंट को कि आपने क्या किया है, आपने कितने जॉब्स दिया है, आपने कितने एम्प्लॉयमेंट दिया है लोगों को, और देश की इकोनॉमी कहाँ जा रही है। आप बोल रहे हो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाएंगे, वहाँ जर्मनी नीचे डूब चुकी है। यही हालत अपने देश के भी कुछ होने वाली है अभी कुछ समय में, क्योंकि जो चीज़ें हो रही है अपने देश में वो अलग लेवल पे हो रही है। जर्मनी जैसे हालात अपने देश के भी बहुत जल्दी हो जाएंगे, जहाँ तक जो कंडीशन अपने देश की दिख रही है उस वजह से अपने को दिख ही रहा है कि अपनी हालत, अपने देश की भी हालत अभी जर्मनी जैसी हो जाएगी। कब इसकी इकोनॉमी जो 5th नंबर पे वो कब नीचे आ जाएगी पता नहीं। और उसके बाद अपने डॉलर डॉलर का कितना अपना जो रुपीज़ है वो कितना नीचे गिर चुका है वो अपने मोदी जी देख नहीं रहे। तो और डिपेंडेंसी इतनी बढ़ चुकी है अपने देश की, हर एक देश से, चाइना से कितनी चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 100 बिलियन से ज़्यादा चीज़ें हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। मतलब डिपेंडेंसी कितनी बढ़ चुकी है। जो हमारा सबसे बड़ा राइवल है, जो सबसे बड़ा अपना दुश्मन है चाइना, जो हर हर एरिया से अपने को घेर चुका है, उसी देश से हम इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है जो अपना 100 बिलियन हम मतलब डॉलर उनके ऊपर हम डिपेंडेंट है। मतलब इतने ज़्यादा हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं चीज़ें, तो जो भी चीज़ हम लेते होंगे उनसे, तो डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है अपनी दूसरे देश के ऊपर। और ये डिपेंडेंसी की वजह से हम इंडिया कब कब डूब जाएगा पता नहीं, और कर्जा ले लेके पागल हो रहे हैं अपने देश। और हमारे देश के जो हमारे राज्य है वो लोगों को इलेक्शन के टाइम में फ्री में पैसा बांटने में बिजी है। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में हुआ, झारखंड में हुआ, अलग अलग महिलाओं को पैसा बस उनको लालच दिया जा रहा है वोटों के लिए। गांव के जो लोग हैं जो रूरल एरिया अपना, उनको अनएजुकेटेड रख के उनका फायदा उठाया जा रहा है। अभी उनको मुफ्त का पैसा बांटा जा रहा है, उनको क्या पैसा मिल रहा है, बाकी चीज़ें भाड़ में जाए, उनको भी कोई उनसे लेना देना नहीं है। फिर उनके बच्चों को जॉब मिले या ना मिले, उनको पैसा मिल रहा है, बस हो गया। और बेरोजगार लोग, क्योंकि उनको भी कोई लेना देना नहीं, वो तो अपने धर्म की जंग लड़ रहे रास्तों पे आके, किसी और के धर्म में जाके तांडव करके। और बाकी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिजी हो चुके हैं, उनको वहीं पे बिजी करवा दिए। और जैसे बिहार जैसे स्टेट में तो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको लाठीचार्ज कर रहे हैं। बिहार की गवर्नमेंट अपने बीपीएससी के जो स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं। तो मतलब अभी अपना लोकतंत्र का देश है, जहाँ पे हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, जहाँ पे हम हक की मांग कर सकते हैं, उस देश में आज अगर हम अपने हक का मांग मतलब हक की चीज़ें मांगने गए, वहाँ पे अपने ऊपर लाठीचार्ज होता है। अगर किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो वो लोग अपने को ही मारने के लिए आ जाते हैं। तो अपना देश पता नहीं किस हालत में जा रहा है। जो हमारे लीडर है, लीडर तो छोड़ ही दो, जो हमारे पब्लिक सर्वेंट जिसको हम बोलते हैं, पुलिस ऑफिसर्स, जो हमारे आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर, जो भी चीज़ जो डीएम कलेक्ट अपने जो होते हैं, वो आज नौकर बन चुके हैं। मतलब नौकर ही बोल दो उनको, वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। जो हम उनको पब्लिक सर्वेंट बोलते हो ना, वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। पी का मतलब पब्लिक नहीं है, पी का मतलब पॉलिटिकल है, ठीक है, मतलब वो पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन के सर्वेंट है वो, हमारे सर्वेंट नहीं है पब्लिक के। पी का मतलब भी वो पॉलिटिशियन है, वो पब्लिक रहा ही नहीं अब, क्योंकि वो पब्लिक के लिए क्या काम कर रहे हैं।
हमारा ना कलेक्टर हमारे पब्लिक के लिए काम करा, ना हमारे पुलिस ऑफिसर पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। वो तो पॉलिटिशियन के लिए काम कर रहे हैं, जैसा पॉलिटिशियन बोलेगा वैसा वो करते हैं। तो वो उनको पब्लिक सर्वेंट कैसे बोलते हैं अपन? वो तो फिर पॉलिटिकल सर्वेंट हो गए। और क्योंकि हम एज अ पब्लिक अगर उनको पब्लिक सर्वेंट मानते हैं तो हम उनसे इतना डरते क्यों है? क्योंकि उन्होंने वैसा एक बना के रखा है रुतबा कि अगर हम उनके अगेंस्ट जाएंगे, हम उनके कुछ बोलेंगे तो वो हमको मार देंगे। ठीक है। और वो किस वजह से हुआ है? क्योंकि वो पॉलिटिकल सर्वेंट है, वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। अगर पब्लिक सर्वेंट रहते तो मिलजुल के रहते थे। जैसे हम हमारे टीचर होते, टीचर्स हमारे एज अ गुरु जैसे तो हमारे साथ कितने अच्छे से रहते। बट वो भी अगर वो पब्लिक सर्वेंट है जो लोगों के लिए काम करना करते हैं, हमारे पुलिस ऑफिसर जो भी कलेक्टर वगैरह, तो उनसे हम डरते क्यों है? क्योंकि उन्होंने बना के वैसे रखा है, क्योंकि वो हमारे हमारे सर्वेंट नहीं है, वो पॉलिटिकल लीडर्स के सर्वेंट है। तो अभी उम्मीद किसी से नहीं रही है। अगर हम खुद के लिए लड़ना भी चाहे तो हम उम्मीद किससे रखें? ना पॉलिटिकल लोगों से रख सकते हैं अभी, और ना हम अभी हमारे जो पब्लिक सर्वेंट जिनको बोलते थे वो तो पॉलिटिकल सर्वेंट, अभी किससे उम्मीद रखें? जो अपोजिशन लीडर है उनसे भी हम उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि वो भी तो ढंग से मुद्दे नहीं रख पा रहे हमारे। तो देश की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। अभी जो हमारे लोग हैं वही एक दूसरे को साथ आना पड़ेगा। जो लोग दिमाग से भटक चुके हैं, जिनके ऊपर कट्टरता आ चुकी है, उनको थोड़ा सा समझाए, जो हमारे दोस्त भाई ये उनको समझाए कि ये सब करने से हमारा देश आगे नहीं जाने वाला। देश कब कहाँ ख़त्म हो जाएगा हमको पता नहीं चलेगा। कब बाहर का देश इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा और अपने ऊपर इंटरनल वॉर वॉर करके एक्सटर्नल वॉर भी ला देगा अपने सामने, तब अपना देश एक दूसरे के साथ रहेगा, तभी हम अपने जो बाहरी हमारे दुश्मन है उनके साथ लड़ सकते हैं। बट अपने देश में अभी इंटरनल वॉर ऐसे हो रहे, तो कब अपन एक दूसरे के साथ आएंगे और अपने जो लीडर अपने जो बाहरी दुश्मन है उनके साथ लड़ेंगे? क्योंकि चाइना तो ऑलमोस्ट अपने आ चुका है, जो अपने देश को घेर चुका है आजू बाजू से। अपने जो मीडिया है, हमारा न्यूज़ चैनल जो है वो दिखा नहीं रही है सब चीज़ें। अगर आप देखोगे जो जो सोशल मीडिया पे वायरल वीडियोस आते हैं वहाँ से बोलते हैं इसके ऊपर सर्च ना करो, लेकिन अब देखो तो ज़रा, बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपको, और कुछ कुछ अच्छे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने भी इसके ऊपर वीडियोस बनाए, कि ऑलमोस्ट चाइना ने अपने को चारों ओर से घेर चुका है। अलग अलग एंगल से वो उसने पकड़ के रखा है। इवन अपने जो बॉर्डर से वो भी कुछ ना कुछ चाइना के अंदर जा चुकी है। अगर ऐसा ही रहा, और इवन अपन क्या है डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, जैसे अभी मैंने बताया था 100 बिलियन से ज़्यादा अपन इंपोर्ट करते हैं वहाँ से चीज़ें। तो डिपेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और डिपेंडेंसी की वजह से ही देश बर्बाद होता है। अगर पकड़ के चलो हमारे चाइना ने बंद कर दिया अपने को कुछ भी चीज़ें देना, तो मतलब जो चीज़ें हैं, जो नीडी चीज़ें अपने को, जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं जो चाइना से हम लेते होंगे, वो अगर हमको मिली ना तो फिर अपनी क्या हालत हो जाएंगी? तो इतनी भी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। हमारे खुद के देश के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें करनी चाहिए थी, जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते ज़्यादातर उसका भी मैन्युफैक्चर किए तो आप अपने देश के अंदर ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला रहता था। जगह जगह पे आपको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओपन करनी चाहिए थी। बट उस चीज़ के ऊपर ध्यान ना देते हम लोग बाहरी देश के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो अपने देश को सिंपली अगर बोले तो बचाने के लिए अपने कोई देशवासियों को ही साथ होना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर जो हमारे हैं एक दूसरे के साथ ही लड़े जा रहे हैं। एक वहाँ पे कांग्रेस है, वहाँ पे एक बीजेपी है, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, और उस बीच में हम फंस रहे। जो हमारे हम एज देश के वासी बोलो, देश के गुलाम बोलो, क्या क्या आप ही सोच लो खुद को क्या कहना है। क्योंकि वही बना के रखा है, दो लीडर है अलग अलग पार्टियों के, दो अलग अलग आइडियोलॉजी है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और उस बीच में हम देश के वासी फंसे पड़े हैं, जिनको बस उन जिनसे टैक्स के नाम पे पैसा लूटा जा रहा है, और गरीब होते जाएगा ऐसी सिचुएशन में, और अमीर होते जाएगा। क्योंकि हमारे जेब में दो पैसा आता है तो टैक्स के नाम पे लूटा भी जाता है। हमें लगता है अभी 10,000 की सैलरी मिल रही तो अभी 15,000 हो जाएगी, तो उसके साथ साथ इन्फ्लेशन हमारे महंगाई इतनी बढ़ जाती है कि वो 15,000 कब जेब से गुल हो जाए पता भी नहीं चलते।
एक साल पहले मेरी सैलरी ऑलमोस्ट 20,000 20-25,000 थी, फिर 30-40 हुई। तो वो भी मतलब वो कब अभी हाथ से खाली होने लगी वो भी नहीं समझा अभी। तो गरीब कितना भी पैसा कमाने का सोचे, थोड़ा सा उसको और ज़्यादा मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा, वैसे वैसे उसका जेब भी वैसे ही खाली होते जाएगा, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के स्कीम्स ही वैसे हैं। टैक्स के महंगाई बढ़ जाती है उसके वजह से, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो है, अगर कुछ लेना भी चाहे उसके ऊपर भी टैक्स लगा के रखें। तो करे तो क्या करे, ऐसी हालत हो चुकी है हमारे देशवासियों की। और हमारे पॉलिटिशियन इतना पैसा खर्च होता है अपने पार्लियामेंट के ऊपर, और पार्लियामेंट का सेशन ऐसे वेस्ट करते हैं पास की बातें खुरदने को। प्रेजेंट में क्या रिफॉर्म ला सकते हैं, क्या चीज़ें कर सकते हैं अपन, सिक्योरिटी की बात का क्या लग सकते हैं, जैसे वुमेंस रिजर्वेशन की बात किया, वुमेन सिक्योरिटी की बात क्या कर सकते हैं। इतने सारे केसेस रोज हर देश के कोने कोने से आते हैं कि हर देश के मतलब देश के कोने कोने से आप हर कोई सुनते आता आ रहा होगा कि कैसे कैसे वुमेन्स के साथ कौन से अपने अत्याचार हो रहे, उसके ऊपर लाना चाहिए। एक सेकेंड, अपनी अच्छी नॉलेज यहाँ पे उन एम्प्लॉयमेंट है, फिर भी देश का युवा एम्प्लॉयमेंट की नहीं है, लड़ रहा है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं। हो जाए इन लोगों का सिलेंडर लेना है, बस चावल दाल आटा चाहिए यहाँ पे युवा को। वही है अपने देश में, क्या बताया अभी, क्योंकि देश का युवा भी तो भटक चुका है। देश का युवा पूरा कट्टरवादी हो चुके हैं अभी। पता नहीं देश में बाहर के जो हमारे दुश्मन है उनसे खतरा है कि अभी देश के अंदर ही एक दूसरे से खतरा हो चुका है। और ये सिर्फ हमारे जो लीडर है उन्होंने जो भड़काने जो वाले अभी स्पीचेस दिए बीच में, उस वजह से हुआ है। और ये बोलते हैं ना, एक आग लगाने के लिए एक चिंगारी की जरूरत होती है, बस वो चिंगारी अपने देश के अंदर लग चुकी है। और वही चिंगारी कब वो अपने देश के अंदर जब पार्टीशन हुआ था, पहले जो पाकिस्तान इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था, सेम सिचुएशन कब अपने देश के अंदर आ जाएगी वो आप सोच नहीं सकते। मैं टीचर हूँ, तो ये सिचुएशन को अगर नहीं रोकना है हमें अपने देश के अंदर, टीचर हूँ ब्रदर मैं, ओके, असिस्टेंट प्रोफेसर, ओके। सो जो हमारे देश की जो हालत है, कब वो पार्टीशन जैसी वाली हो जाएगी, कंप्यूटर साइंस, तो अपने देश की जो हालत है कब पार्टीशन वाली हो जाएगी। क्योंकि जो सेम सिचुएशन है उस टाइम पे भी यही हुआ था। उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो आइडियोलॉजी है, उस टाइम पे जो आइडियोलॉजी है कांग्रेस और जो हमारे मुस्लिम लीग की, ठीक है, इन दोनों की सेम आइडियोलॉजी चल रही थी। वो मुस्लिम लीग अपना अलग ही चीज़ें चाहते था उस टाइम पे, और कांग्रेस अलग ही चीज़ चाहता था। अभी रिसेंटली एक अभी सीरीज भी है, उसमें बहुत अच्छी चीज़ें एक्सप्लेन किया है ये, आप जैसे देख सकते हो, मिड नाइट कुछ तो है, मिड नाइट इंडिपेंडेंस है कुछ, तो वो भी बहुत सही वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, दो आइडियोलॉजीज थी, दोनों अपनी अपनी आइडियोलॉजी से चल रहे थे, और उस आइडियोलॉजी के वजह से ही अपने देश का पार्टीशन हुआ है। सो सेम सिचुएशन अभी चल रही है अपने देश के अंदर, ओके। ब्रदर जॉब्स ही नहीं है यार, क्या बताओ, आईटी फील्ड भी तो अपने अलग ही लेवल पे जा चुकी है। आईटी फील्ड में तो जॉब्स नहीं है, और जॉब्स है कि भी तो फ्रेशर को कितनी फ्रेशर को भी कितनी सैलरी मिल रही है, और ले ऑफ भी तो कितने हो रहे हैं वहाँ से। बस स्किल डेवलप करो और कुछ नहीं, स्किल अच्छी रही तो जॉब मिल ही जाएगी अच्छी। जितना बेसिक स्किल अच्छा डेवलप कर सकते हो बहुत अच्छी बात है। और जो एक स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन करो एक चीज़ में, लाइक जैसे बैक एंड डेवलपर या फ्रंट एंड डेवलपर, एक इसमें स्पेशल अपने एक मास्टर कर लो खुद को,
ताकि अगर इंटरव्यू में जाओ तो आप उस चीज़ से उनको इम्प्रेस करो और वही स्पेसिफिक चीज़ के लिए आपको जॉब मिल जाए। वैसे तो आपकी बात तो सही है। डज सीजीपी मैटर? या लाइक जो कुछ कंपनी होती है स्पेसिफिक, वो क्या करती है, क्राइटेरिया लगाती है कट ऑफ, मतलब कुछ स्टूडेंट को बाहर निकालने के लिए पहले ही, मतलब अच्छे जो सीजीपी होती है उन स्टूडेंट्स को लेने के लिए वो पहले क्राइटेरिया लगा देती है कि इन पर्टिकुलर सीजीपी के उनको स्टूडेंट चाहिए। लाइक जैसे 12th में उनको 60% चाहिए, ग्रेजुएशन में इतने पर सीजीपी चाहिए। फिर लाइक ये ऐसा लगा के रखते हैं क्योंकि उनको जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जो मतलब एकेडमिक इसमें जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वही लेना चाहते हैं। उनको लगता है कि एकेडमिक में जो अच्छा होता है वही अच्छा कर सकता है, बट ऐसा नहीं है। स्किल होती है जिसके एकेडमिक भी अच्छा नहीं होता। और ये बात भी आपकी बात सही है कि लाइक रिस्पेक्ट वर्ल्ड की, कि बिजनेस करना चाहिए, बट बिजनेस तो करना चाहिए वो, बट बिजनेस में भी तो रिस्क होती है जो हर कोई नहीं ले सकता है। हाँ, ओके। डिपेंड अपॉन कंपनी, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है ज़्यादातर। छोटे बिजनेसेस को तो अपने जो बड़े, बिल्कुल, छोटे बिजनेसेस को तो अपने जो बड़े बिग कारपोरेट हाउस है वो चलने नहीं दे रहे अभी। आप देख लो अभी अपने, लाइक जो बड़े बिग हाउसेस है कंपनी के, मतलब बिग हाउसेस का कॉरपोरेट के, छोटे छोटे बिजनेस को भी कवर कर रहे हो। अगर आप देखोगे अभी जो हमारे गांव में या अच्छे से सिटी में जो छोटे छोटे किराने के शॉप चलते थे, बहुत अच्छे से चलते थे, आपने देखा होंगे। अभी उसको भी टक्कर देने के लिए ये अपना जियो मार्ट है, जियो स्मार्ट जो मार्ट है, स्मार्ट पॉइंट बोलते हैं उसको, जगह जगह पे उसने ओपन कर लिया। आप छोटे से छोटी सिटी आपको अगर मिलेगी, लाइक तहसील सिटी बोलो या छोटी से छोटी जो सिटी है, ठीक है, उस सिटी में आप देखो अभी आपको वो जियो स्मार्ट मिलेगा, और एक ही नहीं मिलेगा, दो तीन मिलेंगे अलग अलग जगहों पे। तो लोग अभी वहां जाना प्रीफर कर रहे हैं। तो अगर आप बोलोगे छोटा सा किराना दुकान दुकान में अगर ओपन करना चाहो, सोचोगे अपने घर के अंदर, वो भी अभी नहीं चलने वाला है। सबसे पहले तो और ई कॉमर्स बिजनेस ने तो खा लिया था अपने को, छोटे बिजनेसेस को। उसके बाद अभी जियो स्मार्ट पॉइंट, उसने भी अभी अंबानी लाइक जो है उन्होंने भी अभी, या आई नो ब्रदर, बट मैं बता रहा हूँ कि हम अगर छोटा भी बिजनेस अगर अगर करना चाहे, अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए, अगर हमारे घर पे रूम खाली है छोटी मोटी जिसमें हम करना चाहते हैं, तो उसमें भी तो अभी छोटे छोटे बिजनेसेस में भी वो अपना लाइक कवर कर रहे हैं। हाँ पता है, बहुत सारे बिजनेसेस है, बट मैं बता रहा हूँ कि जो बड़े बिग बिग हाउसेस है बिजनेस के, जो चला रहे हैं अपने देश के अंदर, वो छोटे छोटे बिजनेस जो हम चला सकते हैं उनको भी कवर कर रहे हैं, ये मेरा कहना था। जो मतलब जो कंपटीशन है वो हमारे जो बड़े बिजनेस हाउस है वो हमारे छोटे लोगों को, छोटे बिजनेस हाउस को भी अभी टक्कर देना चाहते हैं। मतलब छोटे लोगों को छोटा ही रखना है, उनको अमीर होने नहीं देना है। और गवर्नमेंट तो हाँ, गरीबों के बारे में सोच ही नहीं रही है। गरीबों को बस गरीबी बनाना है, दाल चावल फ्री में मुफ्त में देना है, बस खाओ ऐश करो। बाकी उनके बच्चों को धर्म के नाम पे लड़ा उधर जाके। इलेक्शन के टाइम पे याद आते हैं वैसे ही लोग, इलेक्शन में जैसे चला जाता है, बाद में बस भूल जाते हो कि ये कौन सा क्या है, कौन सा क्या है, कौन सा क्या है, सब कुछ भूल जाते हैं। बस इलेक्शन जब आता है तब उनको बराबर याद आता है ये। बस और क्या कर सकते हो, इसके अलावा उनके और क्या कर सकते हो बताओ। मंदिर मस्जिद, या बिल्कुल। अभी तो ये मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हो आप, मंदिर मस्जिद छोड़ के अभी दूसरे भी तो चालू हो गए, आपने देखे होंगे। अभी रिसेंटली 25 दिसंबर को क्या हुआ था। एक ही अभी तो नहीं रहा, अभी तो अलग अलग इसमें भी हो रहे हैं। और पता नहीं अपना यूथ भी कहाँ जा चुका है, इतना एजुकेट बोलते हैं हम अपने देश को, और एजुकेशन को नाम पे लिटरेसी जो बहुत खराब हो चुका है। एजुकेशन मतलब जो नहीं मिला है अपने देश के अंदर,
उस एजुकेशन का ही फ़ायदा उठाया जा रहा है। लिटरेसी रेट अपने देश का बहुत खराब है। वही तो, आज भी अपने देश का जो विलेज एरिया है वहाँ पे देखो ना एजुकेशन की क्वालिटी क्या है। स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल है वो बंद होने के कगार पे है। अभी मुझे बताओ अपने जो 2024 में जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ के बच्चे अभी भी नीचे बैठ रहे, बताइएगा। और नीचे तो बैठ रहे लेकिन वहाँ पे के जो अपनी रहते हैं ना नीचे की अपनी फर्श या स्टाइल्स वगैरह जो बोल दो, वो तो खुद ही है, गड्ढे पड़े उसके अंदर, ऐसे जगह पे उनको बैठना पड़ रहा है। अभी मैं अभी मेरे अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा तो मैं रिसेंटली अभी मतलब अभी जाने वाला हूँ एक दो जगह पे मैं, जिसके स्कूल्स वगैरह जो भी गांव है वहाँ के जो क्या हालत है अभी, या जो स्कूल की वहाँ पे क्या हालत है, वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो शो करने वाला हूँ। अभी है मेरी बात चल रही है, अभी ग्राम पंचायत मतलब जो सरपंच वगैरह रहते हैं ना, उनसे मेरी बात चली है, उनसे परमिशन लिया है मैंने वो सब चीज़ें शो करने के लिए। तो जी धन्यवाद। तो मुझे क्या, अभी मैंने वही सोचा है कि जो हमारे जो पॉलिटिशियन है वो तो कुछ कर नहीं रही है, बट हम तो लोगों को दिखा सकते हैं ना कि हमारे देश में क्या चल रहा है, का क्या चीज़ें हो रही है। तो रिसेंट यही गाँव है, मैं वहाँ पे विजिट किया हूँ क्योंकि वहाँ से स्टूडेंट्स आते हैं हमारे कॉलेज में, तो मैं वहाँ पे विजिट किया हूँ। तो मैंने देख लिया था पहले ही, बट मैंने कभी ऐसा यूट्यूब का सोचा नहीं था। बट ये चीज़ें फिलहाल जो चल रही है अपने देश के अंदर, इसलिए मेरे अंदर बहुत भरा था कि नहीं मैं कहीं पर तो बात करूँ जो चीज़ें मुझे लगती है, इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया था। तो ऐसे कुछ है जो मुझे कुछ चीज़ें शो करना है अपने जो देशवासी है उनको, या अपने आसपास के लोगों की, अपने देश के अंदर क्या चल रहा है, क्या क्या डेवलपमेंट की बात करते हैं, एजुकेशन की ये बात करते, तो क्या ग्राउंड लेवल पे क्या एक्चुअल रियलिटी है, कि ग्राउंड लेवल पे हाँ सच में अगर इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया है तो इसका फ़ायदा मिला है लोगों की, नहीं मिला है, ये सब चीज़ें मुझे शो करना है। जी फिर भी नहीं समझेंगे अनभक्त बंजारे दिन, अभी उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। देखो ऐसा है, अपन बस ट्राई कर सकते हैं, और अपने ट्राई करने से एक इंसान भी सुधर रहा है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि जब मैंने चालू किया ना, मैंने ये सब नहीं सोचा था, बट जब मेरे साथ में जो जो लोग जुड़े, वो लोग भी कभी इतना मतलब इतना इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो उस चीज़ को बात ध्यान दे, पॉलिटिकली चीज़ों को मतलब देखे नहीं थे। बट अब जब से मैंने चालू किया तो मेरे आसपास के लोगों ने मेरे वीडियोस देखे, मेरे से जब बात किए तो मैंने कुछ चीज़ें उनसे बताया, तो वो भी अभी इंटरेस्ट लेने लगे इस चीज़ में, वो भी समझने लगे। तो जब तक हम करेंगे नहीं तब तक लोगों को समझेगा ही नहीं, हमारे आसपास के लोग ही ध्यान नहीं देते सबसे पहली बात तो। अगर हम चालू करेंगे तो हमारे आसपास के लोगों को भी मेंटेलिटी धीरे धीरे चेंज होने लगती है, ये मैंने देखा है अभी। इसलिए अपन अगर करेंगे तो 10 में से कोई एक तो होगा, 100 में से कोई एक तो चेंज होगा, उसके थोड़ा सा दिमाग में तो थोड़ा बदलाव आएगा। बस वही चाहते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि देश में एक साथ रहेंगे तभी चीज़ें अच्छी होंगी, नहीं तो बाहर एक अंदर तो झगड़ा होता ही है, बाहर का आके भी कब उड़ा देगा कब झगड़ा करेगा पता नहीं चलेगा। क्योंकि अलग अलग देश में अलग अलग वॉर तो चल ही रहे हैं, और इसका फायदा तो अलग अलग देश उठा ही रहा है, और सबसे बड़ा देश एक जो एक उठाना चाह रहा है अपना फायदा, वो वेट ही कर रहा है इस चीज का। आपको क्या लगता है? जो अपना इंडिपेंडेंस मिला है उसमें अपने जो पूर्वज अगर हम बोलेंगे, उन्होंने बहुत अपना स्ट्रगल किया, उन्होंने अपना जिंदगी दे दी, सब कुछ कर दिया, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं है अब, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर बस अपने हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं, और जो देश वो चलाना चाहते हैं उस हिसाब से वो अलग ही राह पे लेके जा रहे देश को। क्योंकि देश का युवा आज इतना बेरोजगार नहीं रह सकता, मतलब जो जिस देश में सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी पड़ी है, उसी देश में सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार है। कुछ कुछ देशों में युवा है ही नहीं, ये कंडीशन हो चुकी है।
अगर आप गूगल पे सर्च करो कि ये सबसे ज़्यादा यूथ किस देश में है और सबसे ज़्यादा यूथ किस देश में नहीं है, तो टॉप में ऑलमोस्ट अपन ही आएंगे, नहीं आए, और कुछ देश ऐसे हैं जिसमें युवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको, लेकिन उनके पास है ही नहीं, और अपने पास इतने सारे होने के बावजूद बेरोजगार पड़े हैं। और इस बेरोजगारी की वजह से लोग आज पागल हो चुके हैं, जो उनके दिमाग में डाल रहे हैं उस दिमाग से वो चल रहे हैं। और उसके साथ साथ एजुकेशन ही भी तो बहुत मैटर करता है ना, एजुकेशन भी तो क्या मिल रहा है उनको। अगर आप देखोगे यूपी बिहार जैसे स्टेट को जाके देखोगे, उनके ग्राउंड लेवल पे जो विलेजेस है वहाँ पे देखोगे तो एजुकेशन ना के बराबर ही चल रहा है वहाँ पे। तो वहाँ का यूथ क्या सोचेगा फिर, और वहीं से तो ये हेट्रेड निकला है सबसे ज़्यादा। हाँ, अभी रिसेंटली कितने सारे युवा ने किया है कि जॉब्स नहीं लग रही, इतना सारा उन्होंने समय खुद का प्रिपरेशन के लिए दिया, सभी चीज़ों के लिए इतना समय उन्होंने दिया। वही तो एक बात है, हम भी तो क्वालिफाइड होने के बावजूद ही नॉन ग्रांटेड में काम करना पड़ता है, क्या कुछ फ़ायदा नहीं है ना, गवर्नमेंट जॉब निकालती है, अपना पढ़ो इतना कुछ करो, उसके बाद क्या होता है, बस मजदूरी करो। और पेपर लीक भी होते उस वो भी एक सबसे बड़ा, क्या कर सकते हो उसमें। वही तो, वो लीक्स कितने हो रहे एग्जाम्स के, अभी देख लिए हो, अभी नीट का हुआ था, मैक्सिमम अभी चीज़ें जो गवर्नमेंट अपनी ला रही उसमें लीक्स कितने सारे हो रहे, और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में अभी फ्रॉड जैसे केसेस बाहर निकल रहे हैं। तो अभी किसी पे भी आप भरोसा नहीं कर सकते, जिसके पास पैसा है वो राजा है, बाकी सब उसके प्रजा है, ऐसा चीज़ें हो चुकी है। मजदूरी करो, शराब पियो, सो जाओ, देश की चिंता मत करो, अरे वही है भाई, देश को पिला पिला के तो पागल कर रहे हैं, पीला और गुटखा। गुटखा सबसे ज्यादा, आए जाके बस क्लीनिनेस देख लो ना, बाथरूम में जाके बस रेड रेड दिख जाता है, नशा में धुंध करके रखा है अपने देश को, लोगों को। युवा पीढ़ी तो है ही। युवा पीढ़ी तो है ही, अपने एंग जो लग जाएगा, हमारे जो बाप दादा है वो भी तो नशे में ही धुंध है, खर्रा गुटखा तंबाकू, और क्या चीज़ें खा रहे हो, क्योंकि अपने बाप दादा जो जो एज थी उसमें अनएजुकेटेड लोग तो थे ही थे बहुत ज़्यादा, तो उनको तो बना के रख दिया वैसे, अभी जो यंग जनरेशन है उनको भी वही सेम इसमें बना के रख दिए है। जो चीज़ें बंद करना चाहिए देश के अंदर वो चीज़ें तो बंद होती नहीं, जो चीज़ें नहीं करना चाहिए वही चीज़ें अपने देश के अंदर हो रही है अभी, सबसे ज़्यादा तो वही है, अपने लॉज बहुत ज़्यादा खराब, मतलब बहुत वीक है देश के अंदर, जो दिन ब दिन अलग अलग केसेस हो रही है, वुमेंस के रिगार्डिंग बोलो या किसी मेंस के रिगार्डिंग भी, स्ट्रिक्ट लॉ नहीं होने की वजह से इतने सारे केसेस अपने देश के अंदर हो रहे हैं। और क्या कर सकते हैं हम उसके लिए, क्योंकि अपना जो लॉ ही वैसा है, हमारे लीडर ही वैसे है, लीडर ही कुछ चेंजेस नहीं करना चाहते, क्योंकि लीडर्स के ऊपर ही इतने सारे केसेस पड़े हैं। ऐसे देश की हालत है, और कहाँ कब हो जाएगी पता नहीं अपने देश की हालत, कब इंटरनल वॉर हो जाएगा, कब इंटरनल जो सिक्योरिटी अपनी हिल जाएगी, एक दूसरे से कब लड़ना चालू हो जाएगा अपना देश इस हालत से, पता ही नहीं चलेगा। चलो, टाइम बहुत हो चुका है, ऑलमोस्ट 12:30, मिलते कल। धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, जो नए हैं सब सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे कुछ रोज़ का डिस्कशन करने के लिए, देश दुनिया की बातें करने के लिए। भाई चाइना के अंदर युवा का फुल सपोर्ट करती है गवर्नमेंट, और चाइना का साल भर का प्रॉफिट चाइना के युवा के लिए लगता है। वहाँ का सिस्टम अलग है भाई, वहाँ पे कैसे लोगों को
बिजनेस करने के लिए, छोटे छोटे काम करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए एम्पावर किया जाता है, उनको प्रोत्साहन किया जाता है उन चीज़ें करने के लिए। वहाँ का गांव गांव से चीज़ें प्रोडक्ट बनाई जाती है और उनको सेल किया जाता है। और ये अपने देश की भी ये हालत थी उस टाइम पे, अंग्रेज आने के पहले के समय। अपना देश भी बहुत अच्छा था, बट इसको ख़त्म कर चुके हैं अभी। उनका सिस्टम ही सही है। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। वो छोटे से छोटी चीज़ें वहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। हुँ। वही तो, छोटे से जैसे एक छोटे से घर से वहाँ पे चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है, इसलिए वो आज अलग ही लेवल पे चल रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग जो देश करता है, वो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हमेशा रहता है। और मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो पैसे का देवान घेवान चलते रहेगा, तो पैसा उनके पास आते रहेगा। जैसे वो मैन्युफैक्चरिंग कर करके अलग अलग देश में प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। अपने अपने देश का जो भी प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर कर रहे, वो अलग अलग देश में पार्टी वहाँ पे, मतलब सिंगल पार्टी है वहाँ पे। जैसे अपने देश में अलग अलग पार्टी होती है, इलेक्शन वगैरह नहीं है, वहाँ पे सिंगल पार्टी है। यहाँ पे इलेक्शंस मतलब हम्म तो वहाँ पे एक्सपोर्ट चीज़ें करने के वजह से आज इतने लेवल पे जा चुकी है। क्योंकि नाम मुझे भी याद नहीं, एक सेकेंड। चाइना की पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी बता रहे हैं, गूगल पे सर्च किया तो। हम्म। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी है। और वहाँ पे ये नहीं होता, वहाँ पे इलेक्शंस नहीं होते। वहाँ पे बस सिंगल पार्टी कंट्रोलिंग है कंट्री। और बहुत अच्छे से किया है वैसे भी। जैसे अभी अपन नॉर्थ कोरिया कोरिया देखेंगे, किंग जॉन जैसा, उसने तो पूरा डिक्टेटरशिप करके रखा है। लेकिन अपने हम्म लेकिन जो चाइना ने क्या किया, सिंगल पार्टी होने के बावजूद लोगों को इतना फ्रीडम दिया, लोगों ने इतना चीज़ें डेवलप किया, मैन्युफैक्चर किया, जिस वजह से आज चाइना हर एक चीज़ खुद के देश के अंदर बना के दूसरों देशों को बेच रहा है। मतलब कितने सारे अपने में इंडिया चाइना के ऊपर लोग डिपेंडेंट हो चुके हैं। इसकी वजह से आज चाइना बहुत अलग लेवल पे जा चुका है। क्यों अपन ऐसा नहीं कर पाए? क्योंकि अपने देश में लोगों को इनिशियल बहुत पहले से अपने देश के अंदर ये रिलीजियस वॉर चालू है। और इस वजह से लोगों के माइंड सेट या आइडियोलॉजी लोगों की सबकी अलग अलग हो चुकी है। और उसी आइडियोलॉजी के चक्कर में अपना देश कभी डेवलपमेंट के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में नहीं सोच पाया। अपना देश था, पहले था। अपने देश के कितना सारे मसाले बोलो, अलग अलग चीज़ें अपने देश से एक्सपोर्ट होती थी। बहुत पहले बात है ये, अंग्रेज आने के पहले। बट अभी जो है इंडिपेंडेंस के बाद, अंग्रेज जाने के बाद, अपना देश कभी उस लेवल तक जा ही नहीं पाया। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा खराब है अपने देश की। क्योंकि वो बस रिलीजन 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 ही स्टार्टिंग से चल रही, स्टार्टिंग से जब से ये इंडिपेंडेंस पहले की बात करो या इंडिपेंडेंस के बाद की भी बात करो, स्टार्टिंग से अपने देश में रिलीजन 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 ही चल रहा है। बाकी पॉलिटिक्स सही है, देश भी सही है। हाँ, डेवलप बहुत किया उसने, साइंटिफिकली बोलो या टेक्नोलॉजी की बात करो, बहुत डेवलप किया है। आज दुनिया की सबसे ज़्यादा डेवलप कंट्री में आती है। इवन एयर जो प्रॉब्लम थी उस देश की, उन्होंने वो भी तो क्लियर कर दिया अभी। आर्टिफिशियली जो चीज़ें उन्होंने या साइंटिफिकली जो चीज़ें की है उसकी वजह से, मतलब जो वहाँ की जो अपने ईयर हवा जो हवा खराब हुई थी, उसको भी उन्होंने ठीक कर दी अपने साइंस के या साइंटिफिक जो भी उन्होंने चीज़ें वहाँ पे यूज़ की उस हिसाब से। और अपने देश की दिल्ली देखो कितनी खराब हो चुकी है, सिटीज़ अपने देश के। इवन अपने देश का ट्रैफिक सिस्टम आपने देखे होंगे कितना खराब है। चाइना का देखो कितना ज़बरदस्त है। कितने भी इसमें जाते होंगे, लेकिन वहाँ का सिस्टम बहुत सही है। इसके माने ये इसके माने में ये नहीं है कि भारत अच्छा नहीं है।
बस भारत देश खराब कर दे रहे। देश अपना अच्छा है, देश में कोई बुराई नहीं है, देश के लोग भी अच्छे हैं और देश भी बहुत अच्छा है। अगर आप देखोगे, जब हम कॉलेज में जाते हैं, लाइक जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम ये नहीं देखते कि लाइक, जब मैंने तो जो चीज़ देखा है उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि हमने कभी एक दूसरे को किसी रिलीजन नहीं पूछा, किसी की कास्ट नहीं पूछे, हमने सब मिलजुल के रहे, हमारे दोस्त भाई आज भी है, बहुत अच्छे हैं। बट ये जो रिलीजन वॉर है, ये लोगों के पर्सनल बीच में नहीं आता है, ये पर्सनल में नहीं है, ये दो टॉप लीडर जो देश चला रहे हैं या जो लोग हैं जो बड़े बैठे हैं, उन दोनों की अलग अलग आइडियोलॉजी है। उस आइडियोलॉजी की वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं, रिलीजन का यूज कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। नहीं तो अपने देश के अंदर अगर आप देखोगे, एक घर के साइड में दूसरा कास्ट का रहता होगा अपने, तो हम ऐसा नहीं कि उसके साथ अपना रिलीजन अलग अलग होने की वजह से झगड़े हैं अपने। 90% अपने देश के अंदर आपने देखे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि अपने घर के साइड वाला अगर दूसरे कास्ट का है तो अपने उसके साथ झगड़ा है कि रिलीजन की वजह से, या अपने दोस्त कॉलेज में अलग कास्ट का है इसलिए उसके साथ अपनी बनती नहीं, ऐसा नहीं है। हम मिलजुल के रहे अपने देश के अंदर। बट ये जो हमें दिखता है, ये उन लोगों के झगड़े हैं जो हमें अभी पर्सनल लेवल पे या लोगों के अंदर डाला जा रहा है, कि वो उन दोनों की आइडियोलॉजी है, जो बड़े लेवल पे लोग बैठे पॉलिटिकल लीडर, दोनों की अलग अलग आइडियोलॉजी है, दोनों अलग अलग रिलीजन को जो भी करते होंगे, और उन सब में वो लोग क्या कर रहे हैं अब, जो अपने देश के वासी है, अपने देश के लोग हैं, उनके अंदर भी वो चीज़ डाल रहे हैं। क्योंकि आप खुद एग्जाम्पल के थ्रू खुद के अंदर सोचो ना ये चीज़, कि आप जिस कॉलेज में पढ़े हो, जिस एरिया में रहते हो, उस एरिया में आपकी क्या लोगों से रिलीजन की वजह से झगड़े हुए हैं, धर्म की वजह से, जाति की वजह से झगड़े हुए हैं? नहीं ना, बहुत कम हुए हैं ऐसे, जो बहुत कम ऐसे देखने भी मिलेंगे। जिस मैंने तो नहीं देखा आज तक, मेरे किसी के साथ ऐसे झगड़े नहीं हुआ रिलीजन की वजह से कि नहीं तू दूसरे कास्ट का तो नहीं, मेरी नहीं बनती तो मेरे साथ मत बात, ऐसा कभी नहीं हुआ है। जाकर सो जाऊं ना, नहीं तो डासू सर आएंगे, इंस्पेक्टर बना देंगे। हाँ, सोना ही है, अभी ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है। वो रिस्पेक्ट वर्ड भाई थे इसलिए हम बात कर रहे थे। भाई आपका नाम क्या है रिस्पेक्ट भाई? रिस्पेक्ट वर्ल्ड। हाँ वही, सोना ही है अब, ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है। ये आ चुके, कमेंट सेक्शन खराब करने जाने दो। कुछ नहीं, कमेंट सेक्शन खराब करने वाले लोग ही हैं और कुछ नहीं। नहीं समझ रहा भाई आप क्या बोल रहे हो। चलो रिस्पेक्ट बर्ड बाय, मिलते हैं अपन कल। गुड नाइट। एंड सभी को जो ज्वाइन किए, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो। धन्यवाद सभी का। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम सभी को। अच्छे से सो, पॉजिटिविटी के सो जाओ, जिसकी वजह से अपने दिन भी अच्छा हो जाओ, या दिन अच्छा निकले सुबह का या कल का, सॉरी।